Good morning, students. Today we will discuss the important questions of chapter number 5. In previous video, we'll discuss the important questions, very short answer type important questions of this chapter. Today we are going to discuss short answer type question of this chapter. So let us start. Answer the following questions. State Newland's law of octave and what are the limitations or drawbacks of this law. So first, this law states that when Newland arranged the known elements in increasing order of their atomic mass or weight, so increasing order रखा सी उन्हें atomic mass दा, so the property of every eighth element is same or resemble with every first element because उन्हें music दी notations लईयां सी, so हरेक जड़ा eighth element सी उदियां first दे नाल properties जड़ियां सीगियां same सीगियां. So this law is known as Newland's law of octave. It is also known as law of octaves. Limitation, the first limitation of this law, it is only applicable for lighter elements only up to 20, that is calcium. And other limitation, Newland arranged the elements of increasing order of atomic mass, which is a fundamental criteria, not a fundamental criteria. So atomic number ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ periodic table form ਹੋਇਆ. Clear? Next question, explain the features of periods and groups. So features of periods element which are present in a horizontal way, period in same number of shells but different number of valence electron present in a shell. So elements ਜਿਹੜੇ same period ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ. ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ. ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ. Second property, element which are present in a period, they have different chemical properties but same physical properties. ਜਿਹੜੇ element period ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ chemical properties different ਹੋਣਗੀਆਂ but physical properties same. Features of group, the groups are not divided into subgroups. Groups ਨੂੰ ਅਸੀਂ subgroups ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ divide ਕਰ ਸਕਦੇ. The element present in group different number of shells but same number of valence shell. ਜਿਵੇਂ first group ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ number of shells increase ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ but number of valence electron 1 ਹੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, 13th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ electrons ਨੇ. Elements which are present in group, they have similar chemical properties but different physical properties. Next question, account for the following. Elements of group 18 are zero valent and elements of group 1 are monovalent. Means ਜਿਹੜੇ 18th group ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ valence shell ਉਹ complete ਹੁੰਦਾ, so it means zero valent, ਉਹਨਾਂ ਦੀ valency 0 ਹੈ. but ਜਦ ਕਿ group 1 ਦੀ monovalent means mono means 1. So as all know that group 18 elements, their outermost shell completely filled, complete hunda hai, so they neither gain nor lose any electrons, so that's why their valency is 0. So that's why they are called zero valent. On the other hand, in group 1 they have able to lose an electron and attaining a nearest noble gas configuration, so that's why their valency is 1, so it is called monovalent. It is called monovalent. Next question, answer the following questions. List 2 criteria Mendeleev used in his periodic table to classify element. केड़ा criteria use किता सी? State Mendeleev periodic table and explain why no fixed position assigned to the hydrogen in his periodic table. So first, increasing order of atomic mass and similarity in chemical property. First criteria सी atomic mass increase कर रहा सी and chemical property same सी element दी उस वे दे नाल. And the formula of oxide and hydrides formed by the element. उन्हें दो element use किते सी, oxygen ते hydrogen, to check the chemical properties of different elements. Second part, state Mendeleev periodic table, periodic law states that if the properties of elements are periodic function of their atomic masses. ਕਹਿੰਦਾ elements ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ properties ਨੇ, that is a periodic function of their atomic masses, ਕਿ regular interval ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ same ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ. So it means properties of elements depend upon their atomic masses. Third question, Mendeleev could not assign a fixed position to hydrogen in his periodic table
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल च भी उसकी जी पोजीशन वो फिक्स नहीं है, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल विद अल्कली मैटल्स ग्रुप 1 एज वेल एज हैलोजन एटम ग्रुप 16 इन सम ऑफ प्रॉपर्टी सेम एज अल्कली मैटल्स ग्रुप 1 दे नाल, सम प्रॉपर्टीज आर सेम एज लाइक अ हैलोजेंस. So this is a main limitation of Mendeleev periodic table which is was being unsuccessful. उस तो बिना जो गल करिए that is the same limitation for modern periodic table. Next question, the position of three elements x, y, z in the periodic table is given here. Group 16 x last number ते है, group 17 y ते z. So first साडे को जिहड़ा y एलिमेंट आ वो क्लोरीन है, z एलिमेंट आयोडीन है, एक्स जिहड़ा एलीमेंट हैगा वो टेरोलिनियम है. सो दीज आर दी एलीमेंट्स एक्स वाई जेड. सो आउट ऑफ वाई एंड जेड विच एलीमेंट विल बी मोर मैटेलिक. डाउन दी ग्रुप साडे को जिहड़ा मैटेलिक करैक्टर वधदा है बट अलॉन्ग दी पीरियड डिक्रीज करदा है. सो इट मीनस जेड विल बी ए मोर आउट ऑफ वाई एंड जेड. डाउन दी ग्रुप मैटेलिक करैक्टर वधदा है, सो इट मीनस जेड एलीमेंट इज़ मोर मैटेलिक करैक्टर दैन वाई, क्योंकि ग्रुप के दौरान मैटेलिक करैक्टर इनक्रीज करता है. सैकेंड पॉइंट, विल एटॉमिक साइज ऑफ जेड बी स्मॉलर और लार्जर दैन दैट ऑफ एक्स. इट इज़ स्मॉलर. सो एटॉमिक साइज क्योंकि अलॉन्ग दी पीरियड साइज डिक्रीज करता है, सो जेड का साइज की होगा स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स, क्योंकि अलॉन्ग दी पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. थर्ड, आउट ऑफ वाई एंड जेड विच एलिमेंट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर दी है, सो इट मीन्स वाई जेड इज अ स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन वाई. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू. एलिमेंट्स आर ए बी सी, एटॉमिक नंबर 3, 11 एंड 17. सेम पीरियड सेम ग्रुप. जस्टिफाई योर आंसर. बोथ बी एंड सी दे आर सेम पीरियड, क्योंकि ये केस एल एम 11 लिखिए तो 281 है, 17 लिखिए 287. इन्हों का पीरियड सेम है. बी तो सी एलीमेंट का सेम पीरियड है. एंड बोथ एलीमेंट ए एंड बी, दिस वन 3 एटॉमिक नंबर है, सो 2 एंड 1. सो इन्हों का जोड़ा ग्रुप नंबर सेम है, क्योंकि वैलेंसी सेम है. ए तो सी का ए तो बी की वैलेंसी सेम है, सेम ग्रुप है. बी तो सी का जोड़ा पीरियड है वो डिफरेंट है. Next question, for the classification of elements, why the chemist give more importance to atomic number than atomic mass. कि साडे को during a periodic table जिहड़ा presently periodic table है that is based on atomic number instead of atomic mass. क्यों atomic number ਨੂੰ more importance सी. So atomic number is a number of protons present in a nucleus. That's what actually determines the identity of element. क्योंकि जो atomic number है that explain us कि how many number of protons present in an atom. So identity prove करता element दी. So what is the mass number? Is the total number of protons and neutrons in the nucleus. Total proton ते neutron कितने. So most of the chemical properties of element depend upon number of valence electron. Outermost shell दे electrons ते depend कर दिया. So that's why they take atomic number as a more important property as compared to atomic mass. Next question, 3 elements A, B, C have 3, 4 and 2 electrons respectively in their outermost shell. A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਨੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, C ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ. outermost shell. Give the group number to which they belong in the periodic table. So A ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, so it means 13th group हो सकता वैलेंसी 3 है. ठीक है, 13th group क्योंकि 10 ਜਿਹੜੇ कि LM 2 8 3, so ये 13th group है. 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ने, it means 13th group है. अगले नेक्स्ट 2 8 4 तो 14th group है. 2 इलैक्ट्रॉन्स ने आउटर मोस्ट शैल दे विच, तो यदा मतलब साडे को 2 इलैक्ट्रॉन्स सिर्फ के शैल दे विच प्रेजेंट ने. क्लीयर. सो आउटर मोस्ट शैल दे विच सैकेंड जिहड़ा हैगा ग्रुप नंबर उहदे विच साडे कोल प्रेजेंट है 2 8 2. सो 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ा ग्रुप नंबर सैकेंड आ उहदे विच एलीमेंट ही प्रेजेंट है. क्लीयर. So atoms of 4 elements P, Q, R and S have same number of electronic shells but different number of electron in their outermost shell. Same number of electronic shells ने मतलब number of shells equal ने. जे 3 ने तो 3 ने, जे 4 ने तो 4 ने, but number of electron different ने. It means साडे को उन्हां दा period की है same है. So how do the property varies as we move from
element P to S. It means P to Q to R to S, it belongs to a same period. Atomic radii, it decreases क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है डिफरेंट है, सो इट मीन्स पीरियड सेम है. सो एज वी मूव फ्रॉम P to S, atomic radii decrease due to increase in nuclear charge and more attraction of electron towards the nucleus. Second point, density. When we move from left to right, the density only increases up to 3. After it start decreasing क्योंकि perfectly predicted नहीं है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ state ਆ ਉਹ gaseous state ਦੇ ਵਿੱਚ present ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ liquid state 'ਚ. Next, metallic character. We know that from P to S along the period, metallic character decrease करदा due to increase in effective nuclear charge. Next question, the modern periodic table has been evolved through early attempts of De Broglie and Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation of all three attempts. We are already discussing a very short answer type question. So De Broglie triad, the classification of element in triads, three the numbers which see great significance hai, that depend upon atomic mass and property of metal element, but it identify only 9 elements. सो जिन्ने एलीमेंट्स उस टाइम ते पता सी उन्होंने जो सिर्फ 9 ਨੂੰ अरेंज कर पाया. सैकेंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट में सम सिस्टमैटिक रिलेशन दिता एटॉमिक मासेस ते प्रॉपर्टीज़ दे विच एट लीस्ट 20 एलीमेंट्स ही अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. लिमिटेशन, इट इज़ नॉट सक्सेसफुल आफ्टर 20th एलिमेंट. नेक्स्ट, Mendeleev periodic table, it arrange a maximum number of elements in a particular way, that is increasing order of their atomic masses. But limitation, position of hydrogen is not fixed in Mendeleev periodic table. Sodium forms Na positive ion while magnesium forms Mg2 plus. Sodium 11 है K2 L8 M1. So एक electron lose करूँगा, that's why it is form only +1. In case of magnesium 282, मैगनीशियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 282, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ 2+ ਫॉर्म, क्योंकि इट लूजिंग आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन. सो 2 इलेक्ट्रॉन ਉਹਦੇ वैलेंस शेल ਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ 1 है. सो दैट्स वाई सोडियम फॉर्म Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम फॉर्म Mg2 पॉजिटिव. सो इन दिस फिगर एलीमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलीमेंट्स आर जंबल्ड अप, मतलब कि साडे को रीअरेंज ने अकॉर्डिंग टू अटोमिक नंबर नहीं है, इधरों स्टार्ट करना है. सो रीअरेंज करने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक नंबर. सो इतों स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन तो. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये नोबल गैस आ गई. दैन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो यू लर्न फर्स्ट 20 एलीमेंट्स मस्ट. सो एक स्केयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਕਲੀਅਰ? The positions of 3 elements A, B and C in the periodic table in shown below. So group ਇੱਧਰ ਨੂੰ, groups ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ group ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਵਾਂਗੇ. ਸੋ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ A, B, ਇੱਥੇ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ C ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਐਲੀਮੈਂਟ A ਇਜ਼ ਆ, ਸੋ ਗਰੁੱਪ 1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਸੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ. ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਹੈ. ਐਲੀਮੈਂਟ C ਹੈਜ਼ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ 1. C ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7th ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਇਟਸ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਆਕਟੈਟ. ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1. ਨੈਕਸਟ B ਐਲੀਮੈਂਟ, थर्ड पीरियड है, सेकंड ग्रुप है. सो 1 मोर नंबर ऑफ शैल्स दैन दैट ऑफ एलीमेंट B हैज़ लार्जर एटॉमिक साइज. साडे को ग्रुप नंबर सेकंड है, C दे नालों इहदा जिहड़ा एटॉमिक शैल है वो 3 ने, जबकि C दे विच 2 ने. सो इस करके B दा जिहड़ा एटॉमिक साइज है वो लार्जर होगा किहदे नालों, C दे नालों. Next, the elements P and Q belongs to the same period of the modern periodic table and are in a group 1 and 2. So same period ਦਾ ਇੱਕ group 1 ਦਾ, ਇੱਕ group 2 ਦਾ, but period ਕੀ ਹੈ same है. Compare the following character. The number of electrons in their atoms.
देयर एटम्स जे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स साडे कोले सपोज करो ये थीटा ने एज कंपेयर टू पी, जिहड़ा पी है क्यू दे नाल क्यू दे विच जिहड़े नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने ज़्यादा होणगे क्योंकि पी इहनूं बिलोंग करदा क्यू इहनूं। सो क्यू दे विच जिहड़े नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने वो साडे कोले जिहड़ा हैगा ज़्यादा होणगे एज कंपेयर टू पी, क्योंकि अलॉन्ग दी पीरियड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इनक्रीज करदे आ। साइज़ ऑफ देयर एटम पी दा साइज़ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू, इत्थे थीटा की जगह क्यू कर लो, ठीक है। सो क्यू आना थीटा की जगह क्यू, थीटा नहीं आना। सो अलॉन्ग दी पीरियड साइज़ घटदा, सो इसदा मतलब पी का जिहड़ा साइज़ है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू। मैटैलिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप इनक्रीज करदा, अलॉन्ग दी पीरियड डिक्रीज, सो पी इज़ मोर मैटैलिक दैन क्यू। टेंडेंसी टू लॉस इलैक्ट्रॉन पी जिहड़ा हैगा वो ईजिली लूज करूगा क्योंकि इसदा साइज़ साडे कोल ज़्यादा है, सो पी विल लूज ईजिली इलैक्ट्रॉन दैन क्यू, क्योंकि एको इलैक्ट्रॉन लूज करना टू अटेन है नोबल गैस कन्फिगरेशन। फार्मूला ऑफ देयर क्लोराइड पी का जिहड़ा फार्मूला PCl होगा क्योंकि मोनोवैलेंट है, क्यू का जिहड़ा फार्मूला QCl2 होगा क्योंकि वो डाईवैलेंट है, दो इलैक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। क्लीयर। नैक्सट साडे को है कहंदा कंसीडर द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्रुप नंबर दिता होया, पीरियड्स दिते हुए ने, एलीमेंट्स दिते हुए ने ABCD फॉर्म च। सो द एटम ऑफ विच एलीमेंट इज अ स्मॉलर साइज E एंड H। E कित्थे पिया वा सैकेंड पीरियड च, सैकेंड ग्रुप, H कित्थे पिया 17th ग्रुप। सो अलॉन्ग दी पीरियड साइज डिक्रीज करता है, सो H इज़ अ स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू E, क्योंकि लैफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। नैक्सट क्वेश्चन विच एलीमेंट इज मोस्ट इलैक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, किहड़ा एलीमेंट है जिहड़ा मोस्ट इलैक्ट्रोपॉजिटिव है। सो इधर साडे को लैफ्ट साइड ते इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हुंदा है ते डाउन दी ग्रुप इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इनक्रीज करदा, सो D एलीमेंट है जिहड़ा उहदा इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि डाउन दी ग्रुप इनक्रीज करता है। विच एलीमेंट हैज़ ओनली वन प्रोटोन इन इट्स एटम, इक्को ही प्रोटोन है दैट इज़ A, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, फस्ट साडे को हैगा ग्रुप, सो A एलीमेंट है जिहड़ा वो हाइड्रोजन, उहदे च इक्को ही प्रोटोन प्रेजेंट है। नैक्सट साडे को व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ G दी वैलेंसी कितनी है साडे को 2, क्योंकि 16 है, 16 दो इलैक्ट्रॉन गेन करके 18 च जा सकता है। सो 2 एंड 6 यू राइट एनी 1 2,6 दोनों लिख सकते हो क्योंकि 6 इलैक्ट्रॉन ने लूज भी कर सकता है। नैक्सट क्वेश्चन हाउ मैनी वैलेंस इलैक्ट्रॉन डज G हैव, G दे विच कितने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने 10 + 6, तो 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने किहदे च G दे विच। नैक्सट नेम दी एलीमेंट विच इज़ मैटलाइड, मैटलाइड मीनस मैटल भी है सैमी नॉन मैटल भी, दोनों बिहेवियर ने। सो इत्थे साडे को जिहड़ी F है क्योंकि यह नॉन मैटल्स ने, ये मैटल्स आ गई, सो F जिहड़ा हैगा वो की है मैटलाइड है, दैट इज़ जर्मेनियम विच बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम एनी 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलैक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शैल। सिंगल इलैक्ट्रॉन इहदे च हो सकदा हाइड्रोजन दे विच, के दे विच सिर्फ एक ही इलैक्ट्रॉन है। नैक्सट तुहाडे कोल लिथियम, के दे विच 2 ने, L दे विच 1 है। थर्ड वन है सोडियम, के दे विच 2, L दे विच 8, M दे विच 1। You can write any 3 from hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, which you people have remember, you write that one. 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell, that is helium, magnesium, that is K2L8M2, similarly beryllium, K2L2. So these are the elements which contain 2 electrons in their outermost shell. Any 3 elements with filled outermost shell, that is helium, you write neon 2 8 L ਦੇ ਵਿੱਚ, then argon 2 8 8. So these are the elements, noble gases you write here. So these are the answers of first 3 questions, lithium, potassium, sodium. Next magnesium, calcium, beryllium, you write any one. Then helium, neon, argon, krypton. So these are noble gases. Fourth point, the electronic configuration of 2 8 2. There are 2 electron in K shell,
8 electron in L shell and 2 electron in M shell. So it means 12. So 12 atomic number is magnesium. Magnesium element है. So the configuration की आगी साढ़े को 282. So next question, twice as many electron in its second shell as in its first shell. कि साढ़े को जड़ा second shell है उधे च double elements ने as compared to first shell. So carbon दा atomic number है 6. So there are 2 electron in first shell and 4 electron in L shell. So it means जे first च दोने twice of electrons in the second, that is L shell, that contain 4 electron, 2 to the 4. Next question, atomic number of few elements are given here 11, 7, 35. So these are the atomic number of some elements. So 11 sodium, 7 nitrogen and 35 that is bromine. So answer the following, identify the elements sodium, nitrogen, bromine. These are the elements which have atomic number 11, 7 and 35 respectively. So identify the group number of these elements in the periodic table. So first sodium, its atomic number 11, its configuration K2, L8, M1. How many electron in outermost shell? That is 1. So it means its group number is 1. And atomic element of nitrogen having atomic number 7, so its group number is 15 because it required only 3 electrons to complete its octet. So 10 minus करोगे या 10 plus करोगे साढ़े को उस ना group number आ जाएगा. Bromine 35, so atomic number है, halogen का member है, so 17 group number होगा. Next question, identify the periods of these elements in the periodic table. So the period of sodium, there are 3 shells K, L, M and M. So it means third period is there. And in case of nitrogen, there are only 2 shells K and L, 2 and 5. So it means second period. In third case, it's a fourth period because it contains K, L, M and N. So that's why there are 4 periods. So third, second and fourth periods of sodium, nitrogen and bromine. Next, what would be the electronic configuration for each of these elements? We already written here. So you check here the electronic configuration 281 for sodium, nitrogen 25. And electronic configuration of bromine 2, 8, 18, 7. Here M ਦੇ ਵਿੱਚ 18 electrons ਹੁੰਦੇ ਨੇ maximum, which you people this topic in detail you people learn in 11th class. 2, 8, 8, 18, 18. You learn this one. So 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18 plus 7, that is 25. So 10 more electrons are required. So that's why in M shell there are 18. अगे सब शेल भी आ जाते हैं, ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं. डिटरमिन दी वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट. सोडियम दी 1 है बिकॉज इट ईजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन required 3 electrons to attain a noble gas configuration and bromine required 1 electron to complete its octet. Next, write the similarities and differences between Mendeleev and modern periodic table. So similarities, both are arranged elements in groups and periods, and elements with similar properties placed in the same groups, and metals and non-metals are placed separately. But there are some difference. Mendeleev periodic table on the basis of atomic mass, but modern periodic table based on the fundamental property, that is atomic number. So in case of Mendeleev periodic table, there are total 7 groups and 6 periods. So previous question ਚ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 6 periods ਆਉਣੇ ਆ, 7 periods ਨਹੀਂ, 6 periods ਸੀਗੇ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ and 7 groups. So 8th group ਦੇ ਵਿੱਚ 0th group ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ. So there are 18 groups and 7 periods in modern periodic table. So elements are arranged on increasing order of atomic mass. Here elements are arranged based on the increasing order of atomic number. Next we discuss case study. Read the following and answer the given questions. Many elements have been discovered and many will discovered in future. Maximum elements discover हो चुके हैं, और भी discover होंगे. Classification of these elements become
quite important for the chemist. So many chemists try to arrange the elements on the basis of their atomic masses, which was not a perfect criteria. Maximum elements ने earlier attemptations ਦੇ ਵਿੱਚ elements ਨੂੰ arrange ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ on the basis of atomic mass, but that is not a fundamental property. So but Henry Moseley, who tried to arrange the elements on the basis of their atomic number and reactivity with oxygen and hydrogen on the basis of Mendeleev. So 18 vertical columns that are called group and 7 horizontal rows are called periods. So on the basis of this paragraph, here some questions. What is the other name of elements of group 1 and group 2? So group 1 is also known as alkali metals because they never found in free states. And group second elements are called alkaline earth metals. So remember this कि group first ਨੂੰ alkali metals बोलते हैं, group second ਨੂੰ alkaline earth metals बोलते हैं. But alkaline earth metals ਦੇ salts ਜਿਹੜੇ water ਚ soluble नहीं ਹੁੰਦੇ. How many number of valence electron are there in aluminium? Also draw its shell structure. You check here, aluminium atomic number is 13. So K contain 2, L contain 8, M contain 3. So there are K, L, M. So outermost shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ electron ਨੇ 3. So it has 3 valence electrons. So it means its valency is 3. Next question. What is the variation in metallic character along the period? We already learned metallic character decreases as we move from left to right. Next, consider the following element: beryllium, lithium, sodium, calcium, potassium. Name the elements of same period. Beryllium and lithium belongs to second period, calcium and potassium belongs to fourth period. Lithium, beryllium, potassium, calcium, they belongs to same period, second and fourth. Next case study, read the following and answer the given question. The electronic configuration of an element X, that is 2, 8 and 6. There are 2 electron in K shell, 8 electron in L shell and 6 electron in M shell. So what is the atomic number of X? Add these electrons to it. 10 plus 6, that is 16. So 16 atomic number है. Number of valence electron in elements X, outermost shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ electron ਨੇ 6. So in which period the group element X lies? It lies in a 16th group and third period because there are 3 shells, so it means third period. Odd one from the following: oxygen, selenium, sulfur, phosphorus. Oxygen, selenium, sulfur belongs to same group, but phosphorus lies to 15th group. Clear? So ਜਿਹੜਾ ਇਹ element ਸੀ ਉਹ किसी का sulfur ਸੀ. Clear? Next case study, read the following and answer the given question. Metallic character. So what are the metallic character? The ability of atom or group of atoms to donate electrons to form a positive charge. So एक atom किन्ने electron donate कर सकता है positive charge form कर सकता है, that is called electropositivity or metallic character. And we know that down the group metallic character increase due to increase in atomic size, and across the period left to right electropositivity decreases and due to decrease in atomic size. Non-metallic character, the ability of an atom to accept electrons to form a negative charge, which is called non-metallic character or electronactivity. So the elements which have high electronactivity, they have high tendency to gain electrons and form anion. Jade lose karde ne, they will form cation, which gain they form anion, negative charge. So down the group electronactivity decrease due to increase in size, and along the period left to right it increases due to decrease in atomic size. Here you see the graph. Atomic radius increases from lithium to cesium and fluorine to iodine with increase in atomic number. Now let us discuss the question answer based on this case study. So hydrogen is placed along with alkali metal in a modern periodic table, though it shows non-metallic character. Why? Because it can lose one electron like alkali metal to form a positive charge. But the position of hydrogen is not stable even in a modern periodic table because it also shows the properties of non-metals. So position of hydrogen is not fixed. It is a limitation of modern periodic table also. Which element has highest electronactivity? That is fluorine, because it has small size. That's why it has a high electronactivity. So next question, give the reason
for the gradual change in electron activity in halogens down the group. Electron activity decreases because increase in size or atomic radius. So next, justify that fluorine has smaller atomic radius than lithium because fluorine and lithium lie in the same period and the addition of electron in the same shell. So it means valence electron feel more attraction towards the nucleus because more nuclear charge also increases. That's why atomic radius decreases from left to right. So these are the some important question and case studies of this chapter.